the great name of Almighty Allah, who is the most beneficial and most merciful. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. I am a student of University of Sindh from Faculty of Education. This presentation is made by Duaa Masood, daughter of Masood Ahmed, and my roll number is 11. I am from class B8 Honors Elementary, part 3, semester 5th. This assignment is assigned by Dr. Amjad Ali Arain, and my presentation topic is applications of educational psychology. So first, we need to know what is educational psychology. It's a scientific discipline that is concerned with understanding and improving how students acquire a variety of capabilities through instruction in classroom settings. There are some important points to know about educational psychology. ये important points हमें पहले जान लेने चाहिए किसी भी educational psychology को apply करने से पहले. Number 1, educational psychology involves the study of how people learn. Pupil किस तरीके से सीख रहे हैं, including topics such as student outcomes, instructional procedures, personal differences in learning, gifted learners or learning disabilities. Number 2, educational psychologists work with local communities and authorities and social workers in partnership with families and other experts and professionals to help children and young people realize their full potential and achieve their goal. एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट अब किसी भी सोशल वर्कर्स के साथ, टीचर्स के साथ या फैमिलीज़ और प्रोफेशनल्स के साथ पार्टनरशिप करके रियलाइज़ करते हैं कि उन्हें किस तरीके से अपने गोल को अचीव करना है. इन एजुकेशन सेक्टर में साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजीज अप्लाई की जाती हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में टू प्रोमोट एजुकेशनल सक्सेस फॉर ऑल स्टूडेंट्स. What are the aims and objectives of educational psychology? किसी भी educational psychology के aims और objectives क्या होते हैं? Let's see. This is a chart of aims and objectives. In this chart, we have cognitive presence, selecting content, setting climate, educational experience, teaching presence, and social presence. There are objectives of educational psychology. Number 1, to conduct experiments to obtain the best curriculum in various fields. हम experiments करते हैं teaching learning process में और किसी भी curriculum को best बनाने के लिए हम educational psychology को use कर सकते हैं. Number 2, to understand and interpret the behavior of the learner. किसी भी learner का behavior understand करने के लिए, उसे समझने के लिए हम educational psychology को पढ़ना पड़ता है और उसे apply करना पड़ता है. Number 3 is to conduct various tests to find out the students' intelligence. किसी भी students की intelligence को find out करने के लिए हमें educational psychology को apply करना होता है. Number 4, to provide enrichment activities and programs to strengthen intelligence and stimulate the brain. किसी भी brain को stimulate करने के लिए हमें अपनी activities को enrichment बनाने के लिए, अपनी intelligence को power देने के लिए educational psychology को apply करना होता है. Number 5 is to achieve interaction and responsiveness between students and the surroundings environment of teachers and school. टीचर और स्कूल का जो environment है, उनका जो relation है, उसको समझने के लिए भी हमें educational psychology को apply करना होता है. Okay, so this is how we educational psychology promotes teaching and learning process. Let's see. This is a small chart. In this, psychologists working in the field of education, psychologists और teachers working करते हैं हमारी किसी भी education की field में, तो वो जानते हैं कि people किस तरह से सीखते हैं, किस तरीके से knowledge gain कर रहे हैं, वो apply करते हैं किसी भी psychological science को या educational psychology को to improve the learning process and promote educational success for all the students. How educational psychology applied? Psychologists or teachers working in education study the social, emotional and cognitive process involved in learning and apply their findings to improve the learning process. Some specialize in the educational development of a specific group of such as children, adolescents or adult, while others focus on specific learning challenges such as attention deficit hyperactivity disorder, which is also called ADHD, or
dyslexia. There, there are some major perspectives when we apply educational psychology. Number one is the behavioral perspective. It suggests that all the behaviors are learned through conditioning. ये हमें ये सजेस्ट करता है कि जितने भी हमारे behaviors हैं वो conditioning के थ्रू सजेस्ट करते हैं या फिर हम उन कंडीशनिंग के ज़रिए सीखते हैं. सो टीचर्स माइट गिव आउट टोकन्स दैट कैन बी एक्सचेंज फॉर डिज़ायरेबल आइटम्स सच एज कैंडी टॉयज टू रिवार्ड गुड बिहेवियर. बच्चों को टीचर्स को चाहिए कि वो बच्चों को कैंडी दें या कोई भी रिवार्ड के तौर पे कोई भी चीज़ दें ताकि वो रिस्पॉन्स करें गुड बिहेवियर का, और इस तरीके से ये कंडीशनिंग हो जाएगी. तो बिहेवियरल पर्सपेक्टिव इस तरीके से हम एजुकेशनल साइकोलॉजी में अप्लाई कर सकते हैं. While such methods can be useful in some cases, use intrinsic motivations for learning. Number two is the developmental perspective. Developmental perspective focus on how children acquire new skills and knowledge as they develop. डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव हमें बताता है कि चिल्ड्रन किस तरीके से न्यू स्किल्स को एक्वायर कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं और किस तरीके से डेवलप हो रहे हैं. बाय अंडरस्टैंडिंग हाउ चिल्ड्रन थिंक एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, स्टूडेंट्स किस तरीके से डिफरेंट सोचते हैं डिफरेंट स्टेजेस में. एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट और टीचर्स को चाहिए कि वो स्टूडेंट्स की ग्रोथ, चिल्ड्रन की ग्रोथ पे फोकस करें और देखें कि उनमें क्या क्या स्किल्स आ रही हैं. दिस इज़ ऑल्सो how we apply educational psychology. Number third is the cognitive perspective. It focuses on understanding how people think, learn, remember and process information. Cognitive perspective हमें बताता है कि pupils किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके से चीज़ों को याद रखते हैं, सीखते हैं और कोई भी information gain करते हैं. Teachers or instructors who take a cognitive perspective are interested in understanding how kids become motivated to learn. जो टीचर्स कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव को यूज़ करते हैं उनको पता होता है कि किड्स को, चिल्ड्रंस को किस तरीके से मोटिवेट करना है, हाउ दे रिमेंबर द थिंग्स दे लर्न एंड हाउ दे सॉल्व प्रॉब्लम्स अमंग अदर थिंग्स. Now I ended my presentation with Don Davy quote. He said, "Education is not preparation for life. Education is life itself." Thank you.